Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Cantab Publishers. Dear students, for complete understanding of General Science Class 3, you need the following 4 books. The first one is General Science CSS series Cantab Publishers, जो कि ऑलरेडी आपके पास है. इसके साथ ज़्यादा बेहतर होगा कि चूंकि दीज आर समर वेकेशंस तो आपके पास समर पैक भी मौजूद हो. जो एसएलओज आप लोग सीखेंगे जनरल साइंस बुक में, उन एसएलओज को कवर करना, उनकी एक्टिविटीज मौजूद हैं आपके समर पैक में. एंड इन द सेम वे आपके पास साइंस बुक की वो बुक अगर आपके पास हो तो आप लोगों की जो लर्निंग है उसकी रीइंफोर्समेंट के लिए दिस इज वेरी सपोर्टिंग बुक. और उसके पास जो चौथी बुक है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज रिसोर्स पैक. रिसोर्स पैक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और कोई भी इधर योर पेरेंट्स, इधर योर टीचर, इधर योर सिबलिंग्स कैन डाउनलोड और आसानी से आप लोग इससे गाइडेंस ले सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यू सॉ अबाउट 14 inventions. Now just have a glance on think for a while, life without any one major inventions. आपने बड़ी बड़ी इन्वेंशंस देख ली. सपोज हम उसमें से एरोप्लेन को माइनस करते हैं, या हम उसमें से कंप्यूटर को माइनस करते हैं, या उनमें से हम टेलीविजन को माइनस करते हैं. व्हाट विल हैपन? ओके, देयर विल अ लॉट ऑफ things which we can't do without that invention. So just have a glance on the text and then we will go forward. Life without invention would have been very difficult. Vaccines are one of the major and most important invention. Healthy life has become dependent on vaccines. वैक्सीन को निकाल दिया फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसी पेज पे जो आपको नजर आ रहा है, वैक्सीन have saved millions of lives from diseases such as smallpox, hepatitis, measles and tetanus. आप लोगों को भी हुई थी. सारे बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं जिसकी वजह से माशाल्लाह आप लोग तंदुरुस्त हैं. वैक्सीन have eradicated diseases like smallpox due to which millions of people had died off. Polio is near to end just because of its vaccine. So vaccines play a big role saving the world from diseases. It was a small little vaccine, small little invention. अगर हम बड़ी inventions को ले लें तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है. यहाँ पे do you know Alfred Nobel in 1895 gave the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, psychology or medicine and peace. This is the world largest award for any one inventions. Look, yet we have seen a lot of inventors, उनको बहुत बड़े Nobel prizes मिले हैं, उनको बहुत बड़ी बड़ी इनामात मिली हैं इनके ऊपर. So you also work hard to go for that. And now I'm coming towards invention that improved lifestyle. यानी हम किसी भी बिग इन्वेंशन के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, और रह भी लेते हैं तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी. और अभी हम देखेंगे कि इन्वेंशंस ने क्या किया हमारी जिंदगी में, क्या हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया. इन्वेंशंस हैव इंटायरली चेंज आवर लाइफस्टाइल. पीपल वर यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम मंथ्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. आई टोल्ड यू अर्लियर, the same distance now covered in hours with the help of invention of airplane. People use tonga for transportation. Now they use cars, buses, trains. The farmers were used to using bullock for plowing lands, which would take much time and labor. Now the same work is done with the help of tractor in a shorter time and very less effort. Initially it was like this. ये देखें, फिर ये लकड़ी का आया, फिर लकड़ी में, और ये टोंगा का आपको टायर नजर आ रहा है, फिर इससे काट का नजर आ रहा है. एंड दिस इज, और आजकल आप लोग देख रहे हो रेसिंग कार्स के. हाउ वुड द लाइफ बी विदाउट व्हील? अगर व्हील ना होता तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती. और हम आज भी कैमल यूज करते. डियर स्टूडेंट्स, हाउ एन इन्वेंशन कुड चेंज लाइफ इन फ्यूचर. अब पिछले की बातें तो पिछले की हैं. आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ चेंज हो सकता है. हाउ एन इन्वेंशन
could change life in the future. According to the scientific society, anything invented is like a knife. किसी भी चीज की अच्छी और बुरी दोनों एस्पेक्ट्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है इस्तेमाल करने वाले पे। अब मोबाइल फोन है प्यारे बच्चों, कुछ लोग इस पे टाइम जाया कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, और कुछ लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। सेम इज द केस विद कंप्यूटर। सम ऑफ द पीपल they are wasting their precious time and some people are utilizing it. A knife can be used to cut throat and spill blood, and it is also used for good purpose like cutting fruit and vegetables. It depends on the person who use it. Likewise, science can also be used for benefits of living beings as well as for their destruction. All the newly invented stuff can be used for well-being as well as destruction. It can make life more comfortable and luxurious and vice versa. जिंदगी को आरामदेह भी बना सकते हैं हम, जिंदगी को नुकसानदेह भी कर सकते हैं इस पे। In other hands, we can notice that many inventions defy the environmental circumstances. For example, whether we can modify the heat as we use the air conditioned system. In coming years, fully automated robots can lead us to laziness. जितने जितने जिंदगी कंफर्टेबल हो जाती है, लोग आराम पसंद हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। So we need to be very active. अगर हमें फैसिलिटी मिले वो मिले, लेकिन हम उसको यूज करें और ना कि उसका मिस यूज, यानी किसी चीज का मिस यूज नहीं करना बल्कि यूज करना है। Got it? Now coming to that very important activity, आप अपनी चॉइस के मुताबिक एक पैराग्राफ लिखें जो इन्वेंशन के, आपके फेवरेट इन्वेंशन के बारे में हो, उसकी पिक्चर्स भी लगा दें, उसके इन्वेंटर का नाम लिखें, ईयर ऑफ इन्वेंशन भी लिखते हैं, पर्पस भी लिख दें, क्यों क्या था, इंपैक्ट ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी पे उसका क्या असर है, और यानी उसका कोई डिसएडवांटेज भी है या नहीं है। सपोज यू टेक कंप्यूटर, यू टेक सेलुलर फोन, तो उसके क्या फायदे हैं, नुकसानात हैं, वो भी आपने लिखने हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स योर होमवर्क डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क में क्या है, होमवर्क में यानी समर पैक और वर्कबुक की जो एक्टिविटीज है वो आप जरूर देखें, जरूर सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद शो इट टू योर टीचर एंड गेट अप्रिसिएशन। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।